Good morning, BSNL. I am once here again for you for discussing on some of the common issues and the doubts prevailing in the members' mind. When I was reading some of the groups, I found that there was many doubts related to the younger JTOs who are mainly suffering from the pay scale issue E2 and E3. So I thought, why not to discuss these issues from our younger leaders, and I communicated with some of them, and I am thankful to Shri Sunil Gautam ji who had given me the time, and Shri Nitya Jaral ji. He has also given his consent to join my talk show, and I am hoping that they will be joining us shortly. Nitya Jaral ji is a JTO from Nilgiris in the south, and Sunil Gautam ji is JTO in corporate office, and he is also AGS AIGETO. Like previously, this time also I will thank my co-host Mrs. Parul Srivastava, who is with me in the studio. I will request him to join me. Hello, Welcome, Vineet. Parul, madam. Thank you, Uh, Vineet. Thank you. How are you, madam? Yeah, I'm fine. We are expecting that Actually, our this is a guest. nice experience for me joining Mhm. you in talk show. Yeah, thanks, madam. Uh, I'm expecting my guests. They will arrive shortly, and we will let them in the studio. And I can see that Shri Sunil Gautam ji is there in the studio. Ah, welcome, Shri Sunil Gautam ji. Good evening. Good evening. Welcome, Sunil Good ji. evening, ma'am. Good evening. Ah, ah, very thanks. You have given us little of your time. Uh, It's my Madam, pleasure. will you introduce Yeah, our sure, guest sure. It's really to a whole privilege for BSNL? me. Yeah. Sunil Gautam ji, there is a brief description about you. Sunil Gautam ji joined BSNL in 2008 as JE in Karnataka Circle. In 2014, he took transfer to Delhi, served as Deputy GS Snata and then BBOA. After becoming executive in 2017, he is with us, that is AIGTOA, and in 2019, he became AGS. And the most important thing about him, he is chairman of the committee made for pay scale. Chairman of pay scale committee. Welcome, Sunil ji. Thank you, ma'am. Thank you. Meantime, I can see Madam Nitya Jaral ji has also joined. I will welcome you Okay. in the studio. Uh, Yeah. Welcome, Nitya ji. Welcome, Nitya ji. I would like to introduce you also with our listeners. Nitya ji recruited in TTA 2008, got promoted as JTO in 2017 under the JTO RR 2014. He is organizing secretary in CHQ AIG TOA. Most important and relevant here is he is member of pay scale committee. Welcome, Nitya ji. Nitya Welcome, ji, Sunil ji. Welcome, Nitya ji. Good evening, sir. Good evening, everybody online. We hope that we will have a very fruitful and good discussion, and I will be able to convey some of the best thing what you people are doing, and will also bridge the gap that is prevailing between the LIC JTOs and the normal JTOs. One thing I would like to convey from this platform, that what Nitya ji had told, he is not happy with the people say LIC JTO. Why there is a gap? Why the people tell it LIC JTO? We all are JTO. We are recruited from the same RR. The only difference is they were working in the department prior to being promoted as JTO. So RR are same. All are working as a JTO, and there should be only one marking JTO. Why LIC JTO? And I also appreciate that your concern, and I think that people will understand
And I also understand that there should be no gap like this. Vineet, Starting with the yes, madam. interfere you here. He has used a term, divisive term, for LIC JTO and a normal JTO, directly recruited Yeah. JTO. Should not be Yes. Yes. used. I'm totally agree Ah. with him. Yes. Right. Right. And we will hear more from him, and we will hear his views, hear the views of the Sunil Gautam. Uh, Sunil ji, our main concern was to address all the issues related to the or that has been developed due to the LIC, what the other group, what I read, what Nitya ji opposing also, why LIC JTOs. But group is understanding in that only way. So we will try to present that gap and we will try to understand what are the issues and why this has happened. And what I understand, what I feel that there is something one एक खाई बनाया जा रहा है, एक गैप बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. And we will try to also understand the main issues, or what I feel the main issues is the pay scale issue, E2 and E3. That is the main issue which is related to all the cadre. And certainly, what I found that when I talked to you for this time on talk show, and yesterday only I came to know that you people were also working on E2 and E3 pay scale committee, and you were preparing some documents also regarding that. So it has become really a one more advantage for us that we will try to know about that committee also, what you have done and what are the plans. So we will discuss on that also. Starting for, I will request from Parul Madam to start the session and what is your doubts, and we will try to clear all the doubts. Yeah. My first question is from Sunil Gautam ji. Sunil Gautam ji, you remained on important positions in other associations like SNATA and BBOA. Once I heard you that you were saying that associations oppose bringing standard pay scale issue on common platform. So I want to know what is the reason behind that, because this may tarnish their image among all of us. Can you please enlighten the reason? Yeah, ma'am. Actually, the what I can start from the Nitya Jayanji words in her audio message. In his audio message, what he told to us, given a message in that, the divisive term they are using, especially for LIC JTOs. Yeah. So that is the main reason for all these. You can say all these things what we are targeting, especially in BSNL. यू कैन से कि हमको एक तरीके से एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव बीएसएनएल में शो करके पोर्ट्रेट किया जा रहा है, स्पेशली एक हमारी मतलब सिस्टर एसोसिएशंस हैं या हमारे जो भी काउंटर पार्ट्स हैं उनके थ्रू हमको एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स जो बीएसएनएल में होते हैं उनको उस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली हम भी वही एक एग्जीक्यूटिव हैं बीएसएनएल में जो कोई और हो सकता है या जो और आए हैं या और है भी. वी आर आल्सो द सेम एग्जीक्यूटिव्स, बिलोंग्स टू सेम एग्जीक्यूटिव्स, बट बार रिपीटेडली ये टैग लगा के स्पेसिफिक ग्रुप बनाना कि नहीं ये एलआईसी जेटीओज हैं, ये एलआईसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म है या ये एलआईसी के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू harm the whole executive fraternity. तो हम इस चीज को बिल्कुल अपोज करते हैं और सबको इंक्लूसिव लेके एक एग्जीक्यूटिव एज ए होल लेके चलने के लिए हम सबको एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से they should not differentiate yourself from executive or LIC executive. They should be a one part of the BSNL and all belongs to executive. You will get, sometimes you will get promotions to SD grad. At that time, you will not be a LIC SD or direct SD because there is no direct entry from SD cadre.
So here only JTO cadre, because recruitment is in executive cadre recruitment is from JTO cadre only, and one section of engineers JE promoted through JE to JTO through LIC. That's why these divisive terms are using here. So it's a bad for executive fraternity, and it is bad for those LIC JTOs who are actually behind all these things. एंड हमको इस ट्रैप से बाहर आना चाहिए और इन सब चीजों से अलग हटके अपने कैरियर ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि अपने जब हम रिटायर होंगे अपनी रिटायरमेंट एज को सिक्योर करने के लिए हमको सभी को एक साथ इकट्ठा होकर जुड़ना चाहिए. नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन. जब आपने पूछा कि स्टैंडर्ड पे स्केल लाभ रहते हैं, तो yes, I heard so many times in meetings also. I cannot disclose because there is some restrictions in closed chamber meetings कि भाई हम उन सबको completely disclose नहीं कर सकते. But definitely being a sufferer, most sufferer of this executive cadre, मतलब हमारा जो सफर लॉस है, या यूं कहें कि हमारा जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव आने के बाद या बीएसएनएल में आने के बाद जो लॉस हुआ है वो सबसे ज्यादा है. तो उसको अगर हम देखा जाए तो हमको ये मतलब हैरानी होती है ये देखते हुए कि किस तरीके से अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मेन इश्यूज से डेविएट होके हमारे मेन इश्यूज को टेकअप ना करके और अपना ही कुछ अलग तरीके से उनको लेके चलने के लिए परेशान होते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज क्लोज चैम्बर में थी और कुछ हमारी भी मर्यादा होती है एसोसिएशंस के बीच में भी, और डेफिनेटली हम उसको कभी ब्रेक नहीं करेंगे. लेकिन मुझे ये देख के सुन के बहुत हैरानी हुई कि जनरल सेक्रेटरी आइगोटा pleaded against those organizations that you should also come forward to take our standard scale issue. उसी शिद्दत से लो आप जिससे आप अदर इश्यूज को लेते हैं. तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई मैम. Okay, it's good that मतलब you think our association it is with all LIC JTO. I should not say LIC JTO. I should say sufferers. What is your opinion, or what our association is doing for that? What are the steps we have taken so far? मैम एक बहुत लंबी फेरिस्ट है इस चीज में. जब से हमने एग्जीक्यूटिव 2017 से हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे, और हमने जिस तरीके से ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स को एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए स्पेशली जो लोग एग्जीक्यूटिव में जेटीओ कैडर पे आते हैं या जेओ कैडर पे आते हैं उनके लिए फाइट करते हुए देखा है, और ये पाया है कि डेफिनेटली उनके जो एक्शंस हैं और जो डायरेक्शंस हैं वो एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए एकदम सटीक है, और उनका हर किसी को पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ के सपोर्ट करना चाहिए. डेफिनेटली वो सपोर्ट हमें ग्राउंड में मिलता है, लेकिन किसी कारणों से वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. तो वो भी हमें अगर मिल जाए तो हमारा कोई भी मुद्दा आज बीएसएनएल मैनेजमेंट में हो या टीओटी में पेंडिंग नहीं रहेगा. आइगोटा ने, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स ने इस लॉस को या इस स्टैंडर्ड स्कोर को अचीव करने के लिए हर फ्रंट में अपना पूरी तरीके से काम किया है. जैसे मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये कोर्ट केस हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई जो चंडीगढ़ में चल रहा है, और इनिशियली ये आइगोटा का ही केस है और उनके मेंबर्स के द्वारा फाइल किया गया था. तो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि उसको आप परसू करें चंडीगढ़ जाके. तो मैं पर्सनली भी वहां पे गया, उस चीज को फॉलो अप किया और देखा कि वो कोर्ट केस हमारे लिए एक रामबाण हो सकता है. मतलब एक ऐसा हमारे पास हिडन ट्रेजर है, अगर वो हमारे पास आ जाए, अगर उसका जजमेंट आ जाए तो डेफिनेटली हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाएगा. क्योंकि वो कोर्ट केस स्टार्ट हुआ था 2015 से, अल्टीमेटली उसी कोर्ट केस को लेके हम फिर से 2018 में कंटिन्यू किया उसको, और आज हम उसकी फाइनलिटी पे हैं. मतलब अगर वो केस फाइनल हियरिंग पे आ जाता है तो हमें उसका जजमेंट मिल जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हो या कई कारणों से हो, उसमें डबल बेंच नहीं बन पाई वहां पे पिछले 4-5 सालों से, तो वो हियरिंग पे नहीं आ पाया. अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2018 से हम काउंट करें
तो 2022 अक्टूबर 2022 तक वहां कोई डबल बेंच नहीं थी। दैट मीन्स कोई कोर्ट केस, नो कोर्ट केस वर हर्ड इन द चंडीगढ़ कैट हु इज पेंडिंग इन डबल बेंच। तो दैट इज द कंडीशन देयर। नाउ द थिंग इज के जब से अक्टूबर 2022 के बाद जब से थोड़ी कंडीशन रिलैक्स हुई कोरोना की भी और कोर्ट में वहां पे डबल बेंच फॉर्मेशन हुआ, तो वो फिर आगे फर्दर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चंडीगढ़ कैट की वर्किंग कुछ इस तरीके से है कि वो सीएटी वाइज केसेस को लेते हैं। मतलब आपके अगर कोर्ट केसेस 2015-16 से पेंडिंग है तो वो 2015-16 वालों केसेस को पहले लिस्ट करते हैं। तो इस वजह से हमारा केस अभी तक हियरिंग पे नहीं आ पाया है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि अब वो पेंडिंग केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो सारे केसेस की जो हमारी जो हियरिंग थी हमको जल्दी मिलेगी। अभी इसी जुलाई में है एक हियरिंग, और होपफुली अगर मुझे सीएचक्यू का डायरेक्शन होगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगा चंडीगढ़ एक बार फिर से, और मैं पर्सनली भी उसको ऑब्जर्व करूंगा कि उस पर क्या डेवलपमेंट है, और उम्मीद करूंगा कि इस बार हमारा केस हियरिंग पे आए और कुछ उसमें कोई भी डायरेक्शन हमको मिले वहां से कोर्ट से, जिससे कि हम उसको फर्दर आगे लेके आगे मैनेजमेंट के सामने या डीओटी के सामने या एमओसी के सामने उसको रख सके। Thank you. Pardon, सुनील गौतम जी, आई विल टेक जस्ट आपने चूंकि केस की बात की है, and what I find that there is very lots of confusion in the minds of members that there are actually lots of cases are going on. ये आप किस केस के बारे में बात कर रहे थे? और ये केस ये सर ये हेलो स्टैंडर्ड पे स्केल का केस है जिसमें स्टैंडर्ड, मैं इसको थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। मैं इसको सुनील गौतम जी, जस्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट आई थिंक इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, ऑल द viewers who are seeing and all the executives, they will also be able to understand. So the case you are telling about the standard pay scale, I think E2 E3, and that is listed at Chandigarh, no? Yes sir. Okay, Chandigarh, and it will be it is to be मतलब hearing कब है इसकी, when it is supposed to be heard, and what are the chances that we are what we are projecting that where we will reach from this? Sir, we are very close to get judgment from the Chandigarh CAT on standard scale, and this is listed in this month, 17th July. We got an information from Punjab team. So 17th July, we are going to have a hearing on this, and hopefully this time, because all pending cases are by one getting heard, so hopefully our number will also come in this hearing. So इस केस का क्लियर होने का चांस बहुत ज्यादा है, और ये एक बात ऐसा है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। और एगोटा में देखिए, ये होता है कि एक एसोसिएशन का अप्रोच या एक एसोसिएशन का विजन क्या होता है। जब हमारे 2014 में स्केल डाउनग्रेड किए गए थे, उसी वक्त ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स ने इस पे कोर्ट केस किया, फाइल किया, और मैनेजमेंट को और डीओटी को कंपेल किया कि आप इसको चेंज करो। तो ये उनको इस चीज के बारे में पहले से आइडिया था कि हाँ, ये चीज आगे जाके एक बहुत बड़ा नामुमकिन बन सकती है एग्जीक्यूटिव कैडर में, बिकॉज जो लोग आएंगे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स में, आपको अगर आएंगे तो मनी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके पास अगर एग्जीक्यूटिव बाहर से मार्केट से अगर आप एम्प्लॉय लेंगे, गुड क्वालिटी एम्प्लॉय, तो एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास लो क्वालिटी के आने शुरू हो जाएंगे। तो उनको ये पता था कि नहीं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आगे आने वाले टाइम में होंगी कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स को या जो भी डिपार्टमेंट से प्रमोट होके आएंगे कैडर में, एग्जीक्यूटिव कैडर में आएंगे, उन लोगों को एक इक्वल एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट बीएसएनएल में उस पोस्ट के लिए मिलना चाहिए। तो दिस केस इज फाइल्ड इन 2015, नाउ देन ऑनवर्ड्स दिस केस इज गोइंग ऑन। आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जजमेंट या पेनल्टी पे आने की बहुत उम्मीद है। That's a very good thing you have intimated us, and 17th July, that is very near. So we will hope that something good, we are able to hear something good on 17th July. लेकिन आपने कोर्ट केस का जिक्र करके मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाल दिए हैं, लेकिन अभी हम अपने जो फ्लो है उसी पे चलेंगे, वही क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कुछ और कोर्ट केसेस के बारे में भी जानकारी दें आप, because what I came to know from your words and what I have heard that you are well aware with all the court cases and also involved in the legal team
and who are handling the court cases. So I will request in the last that please make us aware about all the court cases which you are aware. Okay, Okay. and from the AGETO plan. And one more thing, what I perceive from your comments that the association AIGTO is following this E2, E3 pay scale cases from two front, from the management front also, persuasion from the management front, and second is from the legal front. That is what I could get from your words, Yeah, isn't it? definitely. Mm-hmm. And Uh, is when there any is there any chances of getting it solved or help from BMS? BMS may help from this on this E2 and E3 pay scales. definitely, sir, definitely, because the the order issued in March 2017 on PO from DOT on JTO JO standard scale. So it was decided 18,850. That PO was issued from DOT in March, I think 27 March 2017. So basically, that is the become the bone of contention of this whole issue. क्योंकि DOT से वो ऑर्डर इशू ऑलरेडी PO हो चुका है, जब तक अनलेस अनटिल एंड दैट इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ MOC. तो जब तक वो MOC के थ्रू चेंज नहीं होगा, रेस्ट एश्योर कि कोई भी स्केल के मैटर्स में हम फर्दर आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हमारी कोशिश है ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और BMS डेफिनेटली एक इतना बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली 1.5 करोड़ उसमें पूरे भारत से लोग उसमें समावित हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन से. तो कोई भी गवर्नमेंट हो, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, कोई भी हो, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म को कोई भी इशू अगर वो रेज करता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली BMS के थ्रू हमें इसमें ब्रेक थ्रू मिलने के पूरे चांस है, और MOC will definitely convince our voice to change standard scale to BSNL executives at starting level to JTO and SD and equivalent to SD and AO. तो वो हमें जरूर मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा. Thank you, Sunil, Gautam ji. from you, as you have said that BMS has paved the way for our success. What is the reason behind that we associated with only BMS? BMS was the only association who could do this? डेफिनेटली मैम, एक्चुअली आज के सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशंस के काम, ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए. अभी तक क्या होता आता है कि जनरली होता क्या है कि हम कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन हम सिर्फ अपने ही राइट्स की और जिम्मेदारियों की बात करना पसंद करते हैं. अब उसका नतीजा क्या हुआ? BSNL का फॉर्मेशन हुआ 2000 में, उसको आज इस कंडीशन में आते आते 20 साल लग गए. ये किसका नतीजा था? ये उन्हीं पॉलिसी का नतीजा था जो उस समय BSNL में वो ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी. उनकी वजह से आज हमको ये स्थिति झेलनी पड़ी. हमको MA का टैग मिला 2020 में. आप स्थिति जान सकते हैं किस तरीके की थी. उस स्थिति से हमने BSNL को निकाला है एक तरीके से. बीइंग MA हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी से, बीइंग AIGTO एज MA, हमने पूरी जिम्मेदारी से BSNL के लिए और उसके एम्प्लॉइयों के लिए सोचा, और उसके जो डायरेक्शंस BSNL के लिए और उसके एम्प्लॉइयों के लिए सही हो सकते थे वो डिसीजंस लिए. हमने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो पहले उनका हर लेवल पे अपोज ही होता था. हमारे हाथ बंधे हुए थे उस समय, हम कहीं किसी लेवल पे मैनेजमेंट के पास नेगोशिएशन टेबल पे नहीं थे, और ये भी तो हम बैक में बैठे होते थे. नाउ वी आर इन नेगोशिएशन टेबल एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट विद आई कांटेक्ट. They cannot deny our demands, or they cannot simply reject our proposals what we are presenting to them. तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसी का नतीजा है कि आज फिर से हम BSNL की वाइबिलिटी के लिए बातें कर रहे हैं, और एम्प्लॉइयों को भी उम्मीद है कि हाँ, हमारा कैरियर इसमें सेफ हो गया है. ये एक अलग विषय हो सकता है कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, पूरे एक लंबी चर्चा है. अगर आपका सवाल उसमें आएगा तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा.
थैंक यू सुनील जी। पारुल मैडम, मैं अब चाहूंगा कि नित्य, आई शुड आस्क समथिंग फ्रॉम नित्या ऑल्सो। Yeah. हाँ, नित्या जी, one question what I feel and I ask normally from each and every person of the BSNL. Was it eco or something else? Anyhow, so it is a general question, and what I want to convey from this question that what people perceive and what people think. Question is very simple. I understand that you were PTA and you must have joined their SNA double TA, SNA Sannata, what we call Sannata. You were the member of Sannata previously, and when you cleared the exam and joined a JTO, you have the option to opt for any of the association which could hear your voice, which could raise your voice. And what I came to know, you preferred AIGETO. So my question is that why you preferred AIGETO to join? There were other associations also. I think it is better to with our brothers because we all come under the same platform. We are fighting for the same things like superannuation benefits, EPF benefits, or our better pay, and for our better career. We still have, I think, when I was JTO, I had a better 25 years of service left in BSNL. I think it is better to travel with the same people who is having under 20 or 25 years in BSNL. So I choose that I should be with our brothers, and I hope that all executives in BSNL will travel in the right platform in near future and in present also. In the same line, what I wanted to know, uh, in the present scenario, what I see, there is a gap being developed between the LIC JTOs and the JTOs. You may be also feeling that. And if you are not feeling that, maybe I am wrong, but what I feel from the various group discussions and the talk from all the members and the brothers and my brothers who are working here at Bhopal, I talk to them also, but I feel that there is a gap being developed. There is no gap, but someone is trying to develop a gap. Why it is so, and is it so? Is the gap being developed? And if the gap is being developed, who are the people who are developing it, and why is it so? Can you please elaborate on this point? See, these are perceptions and dimensions where they stand and how they see. These dimensions and perceptions, it is better to minimize these gaps and to come under one common platform so that our voice may be united and coercive with the management, so that all our issues may be settled. There is no difference among associations, but how people see the other association. I think these should be minimized, and I also vouch for one association in one PSU, so that all the executives will have equal rights and equal power, so that in different association there may be different persons with different strengths. When these strengths of all the executives are collected together against management, definitely we will be having better output in our issues, so that there may be no issues pending, and these differences may be brought down. When our issues are settled, definitely these issues will be brought down. I see in this perception. Thank you. Vineet, as we were discussing before this talk show, there was some scale issue during their JE period also. Can we get enlightened that issue also from Nityanand ji? Nitya Jarlad ji. Sorry. Yes, ma'am. Ma'am, the pay loss issue is common to all, both executives and non-executives. There is no difference. When management has imposed a cut-off date 1/1/2007, then there is no difference among executives and non-executives. As a non-executive, we also joined after 2008. Maybe in 2008 August I have joined the department.
But from then, when it was implemented in 2010 October, we suddenly got to see that there is a cutoff date introduced in the PRC implementation, date of implementation of the PRC. So suddenly we were coming to a point that we will be denied of that fitment benefit. So what we have drawn before this October salary, we were drawing lesser salary. So then we are new to the BSNL. Organization. Yeah. So we will be having some difficulty how they are differentiating us. So we started discussion among us, and the people who were better in things, and some of the seniors who are already there were also helped us how this is you are being differentiated with a cutoff date. So likewise, there was a segregation for a post 2007 executives and non-executives. And I better feel that for the post 2007 executives, there is a problem 22820. They are going for it, Yeah. and if they are very successful in that, and AIGETOA is going very good against that, and now they have formed a court case also in principal cat, and if they are success in that, we can also vouch for on the same platform, so that the same benefits which is extended to the executives by 22820 may be claimed for non-executives also. J2 JTO period of pay loss can also be addressed in the same way. We can also be in a pipeline. If executives are getting 22820, then the same non-executives may also get the 30% fitment the same way. I think it will be a better pipeline to move, and we can easily create uh, a space for us to vouch for that. It's good to hear from you that our association is fighting for all the standard pay scales issues. Uh, just now I came to know that a pay scale committee is also formed, in which you are a member and Sunil Gautam ji is chairman. Can you please, and before few days, you have submitted your report also to Shri Ravishil ji. Is it right? Sunil ji? Yeah, ma'am. Yeah. Day before yesterday, we submitted our report to our General Secretary, Yeah, Ravishil yeah. Verma sir. What And were the main points in that? whatever findings and we have observed, basically this report is prepared by my colleague Nitya Janarji, and what in consultation with all members, because series of meetings we have taken over online mode to get the feedback from all the sections. In that meeting, all sections of peoples are there, including JO, AO, and LIC peoples, and 2007-8 batch JTOs, and SRD peoples, SRD batch JTOs, all are included in that pay scale committee. So that reports, whatever we have findings, whatever prepared by Nitya Janarji, we have submitted physically to our General Secretary Shri Ravishil Verma ji to further take up with management, national management, as well as in DOT or with MOC. And we are looking forward that this report is going to be the crucial one, representing all the details, because this has included real-time figures we have taken in this, using whatever means strength is there, in which cadre, what implications is going to be happen on the BSNL management if this is going to implement from 2007 or 2017, or date of implementation of PRS, that is 1/1/2020, or current date. Like this finding is there. And if you want to get more detail in this reports, my friend Nitya Rand will explain in detail with this, because he well versed with the figures and everything, because he has prepared all this detail and everything. Okay, So, definitely we would like to hear from Nitya ji. Yes, thank you, Sunilji. The report we have submitted deals with the way standard pay scale may be implemented in BSNL.
the financial implication of the which is going to be incurred for BSNL. Then what will be the side case studies? We have conducted case studies also with the different batches. What will be its implication? Like stagnation, whether it will result into any stagnation, or what about the EPP? What will be the cost if standard pay scale is implemented? What will be the EPP? And various other PSUs which has implemented E2, E3 in their entry level cadres, how they have implemented, and how the EPP stagnation, or any of the, even we have gone for micro level also, and we have taken case by case study for each individual, the youngest member in a batch, like that we have taken every under stages of his pay scale, and how the next PRC will be, if PRC is implemented, how the scales will get the spans. Like that we have studied, and we have supported many, and what the benefit is here is, we have accounts people, and we have our most younger people get JTOs, and ourselves, and the experienced and most senior leaders like our CHQ General Secretary, All India President. With their guidance, we were able to give a finite and power-packed report to our CHQ, AGTO CHQ, so that this report, when they submit to management, or when they take the report to DOT or with the MOC, this report will have all the details, and it will all address all the issues, and whatever the MOC or from DOT, whatever the questions might be asked, all are detailedly reported in the report. And this report will have all the answers, clues to all the questions. Nearly, literally, it will cover all the issues relating to standard pay scales, and how it can be implemented. What are the effects of this? What are the any side effects? We have anticipated some side effects also, and we have explained how it can be addressed. Like that, we have given every dimensions. We have thoroughly we have conducted nearly 20-25 meetings, and gathered every input. The data collected was a very huge data. We have manipulated every data, and we have given a final report, so that it will be useful for our entire fraternity, so that all the people who are sufferers of standard pay scale will definitely get a one-time solution for it. Thanks, Nityaji. Thank you. Uh, Certainly, you people had done a good job, and we hope that this E2, E3 scale issue sees the light of the day. You have told that there are lots of people, you have done lots of meetings. Can you please let us know who are the people behind this committee, who were involved in this committee? Can you mention the name of the people and the fraternity from which they belong, so that we are also aware that the people who are working for us, for our issue day and night. So I will like to know the names of the people who were involved in the committee. Yes, sir. Sir, actually, Sunil Gautam, Sunil ji was the chairman of this committee, and our Prashant Gaurav sir from Bihar, and Vishal Gautam ji from corporate office, the Arish Chand ji, AO BSNL corporate office, and Tapesh Raghav sir, JTO establishment section BSNL corporate office, and Ramesh Gugalotu from Hyderabad, Sanjeev Saini from JAO from Rajasthan, Kunal Kumar, JTO from Shimoga, Karnataka. He is a gate JTO. Raju Patak, JAO, Circle Office, Mumbai. He is also a direct recruit JAO. So we had nearly all the people
from all the dimensions, who will be giving most inputs for the standard pay scales, these reports and discussions, and what will be its effects, like that. That's good. That's good. I came to know some of the names which I know personally, and what I feel that it was a very balanced committee which was formed. I could hear the name of the Gate JTO. I think Kunal is the Gate JTO, and there are JO and AO also. And 2007 and 8 were Prashant Gaurav is from the. So I think some AO from the establishment section were also there. So yeah, it was a balanced committee which was formed, and I hope the report which you have prepared must be very much helpful for us to achieve our goals. Certainly, we will love to hear something more about the presentation which you have made. We will talk about all that. Uh, Time being, I will like to take a question from the comment section, which I have received in the comment section from one Ramesh Punga Vanam. He has asked that what's the stand from management. I will put that question on the screen. What's the stand from management and DOT for E2 scale? Since empty train is placed in E3 scale, I think he is trying to ask about the dot stand, management stand, and what I came to know from your word, it is already cleared from management and it is pending at dot and E3 scale, something related to E3 scale, what he is trying to ask. Can you please elaborate, Sunil? Sir, actually, this is an obvious question because recently we have seen MP result declared and people deputed for training. And we know that these recruitment have been in E3 scale. E3 scale. So this is an obvious questions coming in the mind of executive. And this is the reason why AIG opposing means introducing cadre in between this executive means entry level cadre in between from JTO to AGM rank. This is what AIG is opposing for what. Unfortunately, our all other organizations have not understand these things that if this is implemented, we are never going to achieve our standard scale for JTO and SDs or JO and KO. But what happened is because of some, I don't know what exactly compared to management that these people go on in a hurry to get all these details. Because I was present in PCAT also when hearing was going on. Because when this case is transferred from Chandigarh to Chandigarh or I think anywhere from CAT to PCAT here, and I was available in that hearing also. Marriage judgment is not clear at all. They are just before giving the final judgment, they are just giving the relaxations that you people declare the result, then go, you people send them to training, and then you people give them an whatever it is. But they are never giving a judgment, final judgment in this. Why? Because this is the main reason. If judgment will come very next day, this judgment will definitely challenge in a higher court, and never know what result will get in this. So basically, we can say this management is playing with the career or future with these people, sending to them before getting clear verdict from the court. And that's why we are against AIG is against all this process. This is not something individual that we are opposing to someone, but management itself is not clear what they are going to do, what will happen to it. Why I am telling this? If you recall, this standard scale is approved by BSNL management. It means board of directors approved this standard scale to executives and send it to DOT. Now, standard scale say that executive entry level will start from E2 scale, and then further it will go to SD to A3 scale. Now, if you are recruiting empty here in E3 scale, what will happen to this? Then, if you are recruiting, then why you have approved this standard scale in a board and sent to DOT? These are the hidden questions.
which management don't have the answers. And these are our strong points that we believe this, that definitely we are going to achieve this standard scale sometimes when things will be in our hands. And slowly we are moving in that directions. And as far as this MT training and E3 scale and everything is concerned, in a one meeting, I can say one thing, that top level director level person is also questioning this. The same question they will ask in that meeting. Then, if you are doing this, what will happen to these people? Where they will place? These type of questions they are also asking. That means before getting clarity in this, they are also confused that what is going to be happen. So, sir, AIG having clear vision that things will not be meshed like anything, and career of every employee should be intact, and they will see the progress of career progression of each employee up to the maximum level, and whatever they have decided to get the standard scale, they will achieve it. And definitely we are moving step by step in that direction. Hope I am clear in my points. Yes, yes, I could get your point. Actually, what I believe that uh, management's board of directors, they will only question this. The questions raised by us, they will also question this, and certainly there will be the solution. Uh, Further moving, Sunil, one more question, but I asked from Nitya, the same question from you also. Why did you join AIGETO? Actually, you were also a leader at Karnataka. You are a good leader. And afterward, yeah, I got to know that you joined BBOA, no? And afterward, you joined AIGETO. So, what forced you to join AIGETO? I would like to know that also. Because, yes, please. Sir, actually, I was uh, I was in I was posted in Bangalore. When I see that sometimes I used to come in my home actually here in New Delhi. तो मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था कि एसोसिएशंस और सनाटा और ये सब क्या है. When I got to know that, तो मैंने भी मीटिंग अटेंड करना शुरू किया. तो फिर मुझे लगा कि आई स्पेंड देयर एटलीस्ट 5-6 years. अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, इफ आई कम टू दिल्ली, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिटेड टू दिस फैटर्निटी, जेई फैटर्निटी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांसफर लेके दिल्ली आता हूँ. और जब दिल्ली आया तो उसके बाद डेफिनेटली ऑल दीज पीपल्स आर हियर, बिग लीडर्स आर हियर, इंक्लूडिंग at that time I am interacting with Ravi Verma sir, Amit Roy sir. Sometimes I remember that I interact with RP Saud sir also. So, and there in Karnataka, in Bangalore, I interacted with Ashok Singh sir. At that time he was CS Karnataka. तो पहले से ही इन लोगों से मेरा टच था. And because हमारा क्या मतलब, what I feel personally, it's not for channel, but I feel personally because they are also belongs to the technical background and I also belongs to technical background. तो मुझे compatibility और frequency थोड़ा मैच होती थी. तो शुरुआत से ही मेरा एक क्लिक था. Then after getting post Deputy GS in Sanata in November 2014, I worked hard for this cadre for 2 years. In these 2 years, we achieve a lot under leadership of our beloved General Secretary, then beloved General Secretary Anup Mukherjee, and I learn a lot from him. He's a deep thinker. So we planned very sequentially. We planned for our issues, and slowly we moved, and almost all our targets what we have decided at that time have achieved. And after that. After becoming a JTO, that time also I must tell these things. The fact that at that time IGETOA was not in a good position or in a not a good base to taken up the matters of the executives, because many reasons हो सकते हैं उसके, जो मेरे को ईमानदारी से फील हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ. तो
हमने डिसाइड किया कि हम BBOA ज्वाइन करेंगे। एट दैट टाइम एफिलिएशंस प्रोसेस वाज गोइंग ऑन टू गेट द BMS एफिलिएशंस टू BBOA, तो हमें लगा कि नहीं, हमको इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम करने के लिए मौका मिलेगा, तो हमने वो ज्वाइन किया। देन आई सडनली रियलाइज आफ्टर वर्किंग 6 मंथ देयर कि उसको एफिलिएशंस नहीं मिला है, और जनरली दे आर नॉट the organizations who can think for the executive cadre. Then without having a single thought in our mind, हमने immediately AIGTO ज्वाइन किया और अपने होल सपोर्ट उसको मतलब एक्सटेंड किया, और हमने दिल से उसके लिए काम करना स्टार्ट किया, बिकॉज और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। वो जस्ट बिकॉज they are getting a BMS affiliation and we want to work with the larger organization, that's why we were there. तो हमें लगा कि नहीं, we nurture this association, we nurture AIGETOA, and once this organization will become big and definitely who knows, आज फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था हमें वहाँ पे BMS का affiliation नहीं मिला था, लेकिन आज फिर यहाँ हमें मिल गया। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस affiliations के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, आज वही एफिलिएशन हमें यहाँ मिल गया, तो हमें आई फील मोर एनर्जेटिक, और मुझे ज्यादा एनर्जी के साथ या उत्साह के साथ काम करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीथिंग, दे आर ट्रीटिंग एग्जीक्यूटिव एज ए एग्जीक्यूटिव, दे हैव द राइट ट्रैक टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट, they have the right answer of the management query, they have the excellent mind in front of management who can deviate you from any point. I mean, I can say that they are very clever in their point that how to not to give the things to the members. But AIT peoples, they have very good minds and they have very good understanding of the issues, and they have perfectly compact means what you can say, एक तरीके का पूरा पैकेज है हमारे पास जो हम एक लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कारण यही था ज्वाइन करने का, और डेफिनेटली मैं अपने डिसीजन से आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। डेफिनेटली सुनील थैंक यू करेंगे और सक्सेस मिलेगी जरूर सारे इश्यूज पे। एक और इशू है ये कि जेई मतलब इस फ्रैटर्निटी को could not get promotion due to loss of vacancy. What is your opinion in that? But you're talking about now recently जो what restructuring जो हुआ है। Yes, I think madam is trying to ask that recent promotion which came, and there was some hue and cry that some promotions could have more happened, then some more JTOs would have been covered in that. Something related to that only, no madam? Yeah. Yes. देखिए मैम, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव क्वेश्चन है, और ये हमारे करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। डेफिनेटली वी आल्सो फील हर्ट व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। बट आप देखिए कि जब नवंबर 2021 में आई रिमेंबर 21 नवंबर 2021 को जब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पब्लिश हुआ था कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से, तो हमारी पोजीशन क्या थी? What at that time at what position we were? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। We are just like beggars, not the choosers. हमारी कंडीशन ये थी कि मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम अपने एम्प्लॉइयों को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहे थे। तो इट वाज द स्ट्रेटेजिक मूव कि नहीं, इसको हम अभी एक्सेप्ट करेंगे इस मूव को, एंड वी हैव फोर्स मैनेजमेंट टू गिव ए क्लॉज दैट वी विल रिव्यू दिस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आफ्टर 2 years। तो उस समय के हिसाब से, कैलकुलेशंस के हिसाब से कि जो भी कंडीशंस थी हमारी लैंडलाइन की, या जो भी हम पैरामीटर्स ले सकते थे मैन पावर डिफाइन करने के, वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव कैडर और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो भी ले सकते थे, उन पैरामीटर्स पे जो भी फिट हुआ। और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने तो ड्रास्टिकली एक लेवल पे जो स्ट्रेंथ डिसाइड किया था वो बहुत ही लो था हर कैडर में, नॉट इनफैक्ट इन JTO, SD और AGM, DGM हर लेवल पे था, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमने उसको इंक्रीज कराया उस समय भी, और उसके बावजूद भी एक क्लॉज इंट्रोड्यूस कराया कि हम इसको हर 2 साल में रिव्यू करेंगे अपनी पोजीशन के हिसाब से। और आज वो टाइम है, उस समय कुछ इस तरीके की चीजें हुई
और आप जानते हैं बीएसएनएल मैनेजमेंट में सालों से प्रमोशंस स्टक थे, रुके हुए थे। जो जेटीओ में हमको वैकेंसी मिली करीब 11 साढ़े 11,000 और एसडी में हमें 10,500 के आसपास वैकेंसी मिली, उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोशंस उस समय होने थे वो हुए। उसके बाद वाले बैचेस के लिए वो वैकेंसीज डेफिनेटली कम पड़ी और रही, लेकिन AIGTOA हैविंग स्पेसिफिक प्लान फॉर दिस आल्सो, क्योंकि हमने कहा पहले, मैंने कहा आपको बताया कि आई वाज इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग गिविंग प्रेजेंटेशन टू द CMD और डायरेक्टर HR इन ए बोर्ड रूम, तो आई वाज अवेलेबल इन दैट मीटिंग आल्सो। तो मैं हर चीज का एक तरीके से साक्षी हूं जो हो रहा है। दैट्स व्हाई कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो साथी हैं वो कैसे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं जो यहाँ पे रहते भी नहीं है और यहाँ पे ना रह के और पार्टिसिपेट ना करके 200 2,000 3,000 किलोमीटर पे रह के अपनी बातों को स्प्रेड करते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे पर्सनली हर मीटिंग में और हर उसमें अवेलेबल हूँ और हर डिस्कशन का पार्ट हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, आज के टाइम पे ये डिसीजन ठीक है और इसको हम आगे जाके इस तरीके से करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, आपने देखा होगा रिसेंटली एक रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू का लेटर आया है, वो उसी का पार्ट है। आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम कुछ और हमारी जो वैकेंसीज है, हम कुछ और वैकेंसीज अपने हर कैडर में इंक्लूड कराने की पोजीशन में है, क्योंकि हर पोजीशन में, क्योंकि बीएसएनएल की इंप्रूवमेंट हुई है। आगे वाले टाइम में आपको पता है कि 4G इंप्लीमेंट होने वाला है, डेफिनेटली उसमें भी हमको मिलेगा। आपको पता है कि बीबीएनएल मर्ज होने वाला है, उस मर्ज हो चुका है, उसकी भी वैकेंसी हमको मिलेंगी। आपको पता है कि एमटीएनएल मर्ज होने वाला है, उसका ऑपरेशन जब आएगा तो उसकी भी वैकेंसी मिलेंगी। ऑल दीज आर सेट, मींस आई कैन से कि हमारे पास एचआर प्लान में रिटन डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो जनरल सेक्रेटरी है या हमारी जो टीम है एआईजी की, उसके पास ऑलरेडी रिटन डॉक्यूमेंट में है सारा कुछ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली मूव करना है। तो आज उसी का पार्ट है। कुछ वैकेंसीज आज एलडीसी में नोटिफाई हुई है एसडी में। आप देखिए, कम से कम आज हमारे लोगों को मौका तो है कि एलडीसी में वो बैठ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें से ही हमारे कुछ AIA 3 के लोगों ने कोर्ट केस के थ्रू उस प्रमोशन को रुकवा दिया जो हो सकते थे वैकेंसी की वजह से। उनका भी जेन्युइन रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब उनका कोई रीजन जेन्युइन नहीं है, बट हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसे रुकवाएंगे तो ये डिले होगा तो ये आपके लिए डिले होगा, आपके पीछे खड़े लॉट के लिए डिले होगा, जो एलिजिबल है उनके लिए डिले होगा, और उनके पीछे खड़े हुए लोगों के लिए डिले होगा। आज इस डिले का ही कारण है कि 13 साल बाद फर्स्ट 2007 और 8 बैच के जो टीआर जेटीओ थे उनको 12-13 साल में प्रमोशन हुआ। तो हम नहीं चाहते कि कोर्ट केस के थ्रू या किसी भी कारण ये डिले इंक्लूड हो सिस्टम में, और हमारी पूरी कोशिश है कि उन सब लोगों का जो भी ग्रीव्ड है वैकेंसीज कम होने की वजह से, जिनका प्रमोशंस को डाउट है, उनके प्रमोशंस हम इंश्योर कराएंगे। ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स के जनरल सेक्रेटरी, उनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उनकी सारी टीम इंक्लूडिंग एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट, और उनके प्रमोशंस होंगे। उनको थोड़ा सा बिलीव करने की जरूरत है और थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है। आप अगर फ्रिक्वेंटली 4 कदम आगे बढ़ेंगे फिर चौथेंगे पीछे, 4 कदम पीछे हटेंगे, तो आप पाएंगे कुछ टाइम बाद कि आप उसी पोजीशन पे हैं जहां पे खड़े थे। आपको कंसिस्टेंटली हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए उसके साथ, पार्ट बनिए उसका, सब सजेशंस दीजिए उसमें कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ क्वेश्चन करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा। तो आप विश्वास रखिए, जितने भी प्रमोशन पेंडिंग है 1 by 1 सबका नंबर आएगा। टोल पे खड़ी हुई गाड़ी का नंबर हमेशा 1 by 1 करके ही निकलेगी, वो उड़ के या क्रॉस करके नहीं जा सकती। तो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपका नंबर 1 by 1 होने के बाद ही आएगा। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि नहीं, उनको एकदम जैसे मैंने बताया कि LIC JTO के नाम पे सुपर स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे उनको सबको छोड़ छाड़ के उनको बना दिया जाए, ये भी एक समस्या है यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को पे आपको विश्वास नहीं करना है, और अपने कैरियर प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे मूवमेंट पे ध्यान देना है। आप देख लीजिए, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू देख लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू देख लीजिए, कोई भी कैडर इशू पे अगर आपको कोई डेवलपमेंट दिखता है या कोई बात होती है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है।
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मैनेजमेंट का विजन कन्वे करने के लिए है, नथिंग एल्स। जो सजेशंस देना है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर कि डेफिनेटली हमारे सारे मुद्दे पाइपलाइन में है, हमारी एसोसिएशन सब चीजों के लिए सोच रही है। और एक और बहुत एंड अच्छी बात, मैडम मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर अपन इसको देखें भी, अगर 2-3 साल का आप बैक में जाके इसको रिव्यू करते हो एक फ्लो में, तो व्हाट वी सी दैट in the first phase some JTO were promoted. Then there was a case of left out JTOs, and then they were also promoted. So this is a time circle, and certainly everyone will get the chance as per the merit and their seniority, and everyone will be get promoted. What I convinced from the words of the Sunil, and certainly they will be also be promoted. Yes, madam, please. we should keep patience and have faith in AIGETO. Definitely, we will get that. Next question is from Nitya ji. Nitya ji, what do you say about the residency period for JTO to SG promotion? Is it too long? You think so? 12 years? Nitya, can you get the question, please? Are you getting the question? Sunil ji, you can Hello. respond to this question. Yeah, ma'am. See, Actually, madam is trying to ask that there is a residency period of 12 years, I think, no, for the JTO. Yeah, for You are the asking. ma'am, actually, this is the part of modification of recently SDRR, but that is actually turned out by DOT. There is some reservation of our seva in this, so that is not a part of this RR now. So this residency period of 12 years is now not at all a clause in this RR. So it's as it is, like 3 years residency period is required for JTO to SD promotions. That is continued now. Only change is in this that they have changed the calendar years. Means criteria, residency calculation of that residency period criteria they have changed. That's it. Okay. Coming to the next question, Nitya ji, next question is to you only, as you have worked hard on the preparation of the report for the pay scale committee, isn't it? So I would try to know something about this committee and the report. And the first question is that why did it take so much time to prepare this report? Nitya, am I audible to you? Nitya? I think I'm not audible to Nitya. I'm just removing him and once again. Hello, Nitya, are you able to hear me? I think there is some mismatch of voice. Anyhow, Sunil, coming to you. Yes, sir. Can you elaborate about this committee which was formed for the pay scale study, and you had studied it, and in a one flow I would like to hear from you why was the delay and what did you studied in that report which took so much time? Sir, as I told you, because we have taken a real-time data regarding this, and two specific things we have been told to study. First, the financial implication. If you implement this standard scale to the current employee, what financial implication is going to be beared by the BSNL management. Second part is pension contribution. What pension contribution is going to implication, financial implication going to be on DOT part.
So, and I told you that 4 points we have taken from 2007 because this is the second PRC anomaly and second PRC is actually implemented from 1/1/2007. So 1 point is this. Next point we have taken 1/1/2017 because that is third PRC is due now. And 1 point we have taken uh, VRS date. VRS date means at the 1/1/2020. That is the VRS implementation date. At this time, how many employees were left? That is data we have studied. And if we implement standard scale on this date, what the pension implication and what the financial implication going to be as a BSL management as well as DOT. So these type of study and one more current data we have taken. Suppose if notionally currently implemented this standard scale to executives, so what is going to happen? So these basic parameters we have taken and these data and each category peoples we have taken means one by one case series we have done in this and these all calculations and everything in written form we have submitted to our general secretary for better understanding. So these are the findings we have observed in our report. And, this marvelous work done by Nitya Jaral, definitely his contribution is marvelous in this, and he has completed in a full devotion because if you are in a group or if you are in a committee, then definitely every view is to be considered. Lot of opinions, lot of differentiations were there at that time when we were discussing in meetings over online. So that we have slowly removed, answered, and whatever means progress we can go in a positive direction. We have done. So rest in technicalities and figure wise and everything because he has prepared everything in detail and minutely. I have studied, no doubt about it, but Nitya Jaral definitely can better tell to everyone than me. Definitely. Nitya, are you getting us? Nitya, I do not think I'm so. afraid why my voice is not going there. Nitya, please unmute yourself. Okay, anyway, I think I will give him a call and let me know the exact situation with Nitya. Okay. I think he And is then not I'm able to asking next respond. question And to Sunil ji again. Sunil ji, there is a doubt in LIC JTOs that there are some diploma holders also. So there will be some discrimination in further promotions with them. Well, definitely not, ma'am, because in our RR, whatever is there, it is mentioned clearly. And you can say this thing that whatever management has done, they everything they cannot consult with us, being an association. And whatever in their mind, they can include in that. So whatever is available documents with us for promotions like RR in any grade, that are actually if anything is there which can be the hurdle to the promotion of any employee, definitely AIG will take up that matter and resolve this. There is no problem. द थिंग इज दैट कि ये चीज एक ऐसी है कि मतलब उनको लगता है कि जैसे अगर ये आरआर चेंज हुआ है तो ये हमने मैनेजमेंट को रिटर्न फॉर्म में दिया होगा और मैनेजमेंट फाइल करके पब्लिश कर दिया. ऐसा नहीं होता है. सारी चीजें हमारी जो बातें हैं वो मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है कभी कभी, लेकिन हम फॉर्म है कि हम उनको मैनेजमेंट से वो बातें मनवाएंगे और वो सारी चीज जो एम्प्लॉय के बेनिफिट की है या उनके करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड है हम उनको करवाएंगे. या फिर अगर कुछ है तो हम उसको जरूर टेकअप करेंगे और उसको चेंज करवाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. Thank you so much, Sunil ji. Nitya is able to hear us now. Ma'am. Nitya ji. Yeah.
Yes, ma'am. Yeah. I would like to hear from you also on this part. LIC JTO would be discriminated in further promotions. No, ma'am. Actually, I am also a diploma holder. I have not completed my degree right now. So I also belong to this. If any promotion is not happening for a diploma holder, definitely I will also be in trouble. So I don't feel that such discriminations are there in AGTOA. AGTOA is a place where all executives can hold each other's hand with a free of mind and content in the art. So looking forward for all pension, promotion, and pay in a very equal platform. Okay. Thank you, Nitya. And Nitya, actually, we were trying to hear from you about this committee report, and we are actually short of time. Also, you people have given your precious time. So, can you simply give us the conclusive points from that report? Again, Nitya is not getting my voice. I think so. No, he is not Madam getting Parul, mine madam, can you also. repeat the question? He is not getting mine also. Okay, 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 okay. So, Sunil, I think there is some communication interference with Nitya as the communication system. Anyhow, there is one more question in my mind which always come whenever I see that 22820. There is a pay loss issue of the 2007 and 8 batch. Whenever I Sir, uh, now I am getting from yeah, yes, sir. Once yes. again, can you repeat, sir? Yeah. He's Yes, getting mine. yes. Just a minute, Nitya. Actually, I was now talking to Sunil, and once after this question, we will come to you again. No, or anyway, you if you want to answer that question now, then we can come here only. Actually, Nitya, I was asking that as you had studied, as Sunil was also telling that you studied that committee presentation in a deep, and you have in-depth knowledge also. Just I wanted to hear from you I am not about the getting your committee voice. report, conclusive some of the points, some of the conclusive points. Actually, actually, Nitya, I think you are listening on YouTube. Anitya, please mute that YouTube recording. I think you are listening. Anyway, leave it. I think there is some communication mismatch. Anyhow, Sunil, coming next to that question only, that I think there is some pay loss issue also prevailing with some of the JE who had uh, passed the LIC exam. And that pay loss issue, what I think that prior to becoming JTO, they had faced some pay loss issue, and that has been linked with this pay loss issue. Are you aware of this, and what is this issue, and how? What are the views from you about this issue? Actually, sir, uh, JE Payloads issue right now in specifically in this executive group, LIC executive group, has become a major turmoil right now. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इश्यूज की डेप्थ में नहीं जाते हैं, उनको समझते नहीं है कि उनका होने का कारण क्या था और वो किस वजह से हुए और उनके रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा। हम वो उस चीज की तह तक नहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि उससे एक नैरेटिव सेट होता है, नेगेटिव नैरेटिव सेट होता है और उसकी वजह से एक
गलत इंफॉर्मेशन लोगों में जाती है, और उसी गलत इंफॉर्मेशन का नतीजा है कि ये जेई पेलोस का जो एक मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा मतलब इसमें आया हुआ है। तो आई कैन briefly tell the background of this कि ये this is similar to the JTO पे loss जो भी हुआ उनको। I cannot term this 22,820, मैं उसको टर्म नहीं करूंगा। और सिमिलर केस में जेईस को भी एक तरीके का लॉस हुआ था, और जिस तरीके से उस समय जो डायरेक्ट रिक्रूट 2007-8 के जो जेटीओ रिक्रूट हुए थे उनको एक 5 इंक्रीमेंट उनको दिया गया था किसी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, और उनका लॉस कंपनसेट किया गया था। इसी तरीके से जो सिमिलर मैनर में जब जेई रिक्रूट हुए थे तो उनका लॉस कंपनसेट किया गया था, और उनको भी एक 1 इंक्रीमेंट दिया गया था। डेफिनेटली दैट इज नॉट जस्टिफिएबल, बट फिर भी उसी के नाम पे उनको एक चीज दी गई थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, एंड आई वाज एक्चुअली बिहाइंड दैट 1 इंक्रीमेंट। मैंने मेरे जब मैं वहाँ पे डिप्टी जीएस था, और अनूप मुखर्जी हमारे देन जनरल सेक्रेटरी थे गोटा के सनाटा के, तो उनके ही गाइडेंस में ये 1 इंक्रीमेंट हमको वहां से मिला था, और उसमें कोर्ट केसेस भी थे, उसको स्पीकिंग ऑर्डर्स के थ्रू क्लोज किया गया। बहुत सारी उसमें एक स्टोरी है, लेकिन आज के सिनेरियो में जब ये चीज जनरेट होती है तो लोग कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू कर देते हैं। एज नित्या जैन सेड इन अर्लियर इंफॉर्मेशन, अर्लियर आल्सो इन हिज टॉक के, अगर आप एक सेट ऑफ एम्प्लॉय है और आपको अगर कोई लॉस हुआ है, और अगर वो कहीं कोर्ट में जाता है और उसका सेटलमेंट होता है, तो डेफिनेटली अदर सेक्शंस को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। पर उसकी लड़ाई हम कंटिन्यूअस आज भी लड़े जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। डेफिनेटली आईगोटा मूव अहेड इन दिस आल्सो, और उन्होंने को और टेकअप करने के लिए हाईकोर्ट में भी गए हैं। नाउ कम टू जेई पेलोस, इसमें उनका मानना है कि जिस तरीके से जिस ट्रीटमेंट फैक्टर के थ्रू हमको ये दिया गया था, स्केल हमारा डिफाइन किया गया था एनी 9 में, और दैट वाज एक्चुअली समथिंग 13,600, वो डिफाइन किया गया था। वो ना होके 16,450 होना चाहिए था। तो समथिंग लाइक दिस उनका ये इशू है। बट द प्रॉब्लम इज के वो एक हमारा जो एक हमको जो उस समय मैनेजमेंट के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू हमको जो बताया गया था, वो ये था कि दिस वाज द पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, and negotiation is this was the part of negotiation with the unions, then majority or majority or minority unions, non executive unions, और उन्होंने एक सेट प्रोसीजर पे उस चीज को फिक्स किया, उस चीज को एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उन्होंने उस पे साइन किए, और उसमें हमारा भी कंसर्न लिया गया सनाटा के तौर पे जब सेकंड पीआरसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो हम लोग उस समय ऑफिस बेरर नहीं थे, लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। अब इंडिविजुअल अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के पास एक हथियार है कि वो उसको दिखा के कह सकता है कि भाई हमारा ये ऑलरेडी सेटल्ड एग्रीमेंट है, और उसको आप ये चीज इस चीज पे आपका कोई राइट नहीं बनता है। इट्स अप टू द कोर्ट के वो उसको किस तरीके से लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हमारे टाइम का था। जब मैं अपने टेन्योर में था, आलोक मुखर्जी हमारे जीएस थे, उस समय हमने इस पे पूरी तरीके से कोशिश की, जितने एक्सपेरिमेंट और जितने हमारी चीजें हो सकती थी इस लॉस को कवर करने के लिए हमने किया। देन वी हैंग अप ग्लव्स, हमने अपना उस पे अपना मैक्सिमम देके रख दिया। अब हो क्या रहा है, आपको याद होगा एक आईगोटा से ही कुछ लोगों ने नाराज होकर अलग गए, और स्पेसिफिकली स्केल के लॉस, स्केल मैटर्स पे, लॉस मैटर्स पे एक अलग एसोसिएशन बना ली। हियर आल्सो द सेम थिंग कि सिर्फ स्केल मैटर्स पे एक अलग एसोसिएशन बना ली। जेई में भी ऐसे हुआ कि है वो जेटीओ, लेकिन वो बात करते हैं जेई पे लॉस के लिए की बात बना ली। तो इसका रेदर देन स्प्लिटिंग डिफरेंट ग्रुप, आपको एक प्लेटफॉर्म पे आके उस समस्या का समाधान डिस्कस करके आगे बढ़ना है। अगर आप स्प्लिट होते हुए चले जाएंगे तो आपका समस्या एज इट इज बनी रहेगी। हमारे यहाँ पे भी जब ये चीज ली गई, टेकअप की गई, तो आई कैटेगरीली टोल्ड आवर जनरल सेक्रेटरी और आवर मेंबर्स के साथ मैं इसमें जितना स्टडी कर सकता था
था मेरे एंड पे, मैं समय मैं कर चुका हूँ, तो इट्स बेटर टू हैंड ओवर समवन एल्स टू डिस्कस दिस इशू। तो एआईजी ने लास्ट एजीएम में डिसाइड किया, जो अभी दिल्ली में हुई थी और आप भी उसके पार्ट थे, तो डिसाइड किया कि नहीं, इसका एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी की फाइंडिंग्स को देखेंगे कि इसमें वाइबल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करके। तो उस कमिटी की जिम्मेदारी हमारे जेटीओ है, प्रशांत हमारे जेटीओ है कल्याण से, उनको दी गई और ही एक्चुअली डूइंग ए वेरी वेल जॉब, एंड उनका साथ पूरी केरला टीम दे रही है। स्पेशली आई कैन मेंशन Prashant, Praveen, and all other people, including me, I am also a part of that, and they are studying that matter. और वो उसका अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और दे आर टेकिंग ए फ्रीक्वेंट मीटिंग विद जनरल सेक्रेटरी, एंड दे आर नाउ इन ए पोजीशन concluding that meeting. They are finding the place where to move ahead in a legal matter or in an administrative matter. तो shortly इसको हर कोशिश, हर एक किसी का यही मोटिव है कि किस तरीके से एम्प्लॉय जो उनको किसी भी तरीके की कोई नुकसान हुआ है या कोई लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए। बट जरूरत है सही डायरेक्शन की और सही दिशा की। अगर आप बिना डायरेक्शन के इधर उधर भागेंगे तो पता चला आप जहां से किया था वहीं खड़े हुए। तो हमारा मकसद इस समस्या के समाधान को लेके है और सॉल्यूशन को लेके है, जिससे कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। तो होपफुली हमारी फाइंडिंग्स में अगर कुछ नया आता है जो उन्होंने अपनी सबमिट की है, तो डेफिनेटली इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा और इसको भी उसी एनर्जी के साथ या उसी शिद्दत के साथ टेकअप किया जाएगा जैसे हम अपना स्टैंडर्ड स्केल के लिए टेकअप कर रहे हैं। थैंक यू सुनील। मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और पारुल मैडम भी हमारे साथ हैं, इनको तो घर का काम भी करना रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन आया है कमेंट बॉक्स में, वो सुनील जी से जानना चाहेंगे। JTO to SG वैकेंसी पोजीशंस की को इलैबोरेट कर दीजिए, ये सभी जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली राइट नाउ हमारे प्रमोशंस AIL 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी लिस्ट 2, जिसमें हमारे 2007-8 बैच जो डायरेक्ट रिक्रूट था, SRD बैच जो 2000 रिक्रूटमेंट जिनका 2010 था और जिनका अपॉइंटमेंट 2013 था। और उसके बाद जब AIL 3 शुरू होती है तो वो हमारे जो सीनियर्स थे एक पीरियड में जो 2001 या 2001 और 2 में जो रिक्रूट हुए थे, जिनका जब वो JTO बने तो जिनका रिक्रूटमेंट ईयर 2012 था, बेसिकली 2012 बैच का AIL 3 में प्रमोशन पेंडिंग है। बट मैंने जैसे पहले बताया, अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ कोर्ट केस सीनियरिटी या का इशू लेके कुछ कोर्ट केस हुआ है, उसमें टेकअप नहीं कर पाए। वैकेंसी पोजीशन ये है कि ऑलरेडी हमारे पास करीब मान के चलिए 750-800 वैकेंसी के आसपास हमारे पास रखी है, जिसमें 67% कोटे की वैकेंसी का प्रमोशंस AIL हो चुका है और वो नोटिफाई हुई थी हमें जहां तक है अप्रॉक्स 550 के आसपास। तो 550 वैकेंसीज उसमें थी, जिसमें से 250 वैकेंसीज का प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका है अप्रॉक्स, मैं ये अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ। और कुछ 200 वैकेंसीज का प्रमोशन और होना है, जो AIL 200 से 300 वैकेंसीज का प्रमोशन का और होना है जो AIL 3 से है। ये राइट नाउ पोजीशन है। और इसमें जो NTC नोटिफाई हुआ है उसमें करीब 400 जो नोटिफाइड वैकेंसीज हुई है, करीब 8 के आसपास उसमें नोटिफाई हुई है। तो वो वैकेंसीज हमारे पास है 33% कोटे में, उनका नोटिफिकेशन अभी है। अब इसमें फर्दर जो स्कोप है वैकेंसीज का और जो AIG के पास उसका प्लान है, उनके पास देखिए सारी चीजों को यहाँ पे इलैबोरेट करने से कभी-कभी दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन उनके पास वो प्लान है कि जिसमें सभी लोगों का प्रमोशन इंश्योर किया जा सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट 12 में जो हमारे सीनियर्स हैं, SD हैं, उनका प्रमोशन पेंडिंग है, लिस्ट 13 पे नंबर आता है। तो उनका अगर प्रमोशंस होता है तो डेफिनेटली SD ग्रेड से वैकेंसीज
जनरेट होंगी, तो उन वैकेंसीज को हम इन प्रमोशंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्दर फिर अगर हम एजीएम टू बीजीएम प्रमोशंस की बात करते हैं तो एजीएम में वैकेंसीज जनरेट होगी, तो एसडी टू एजीएम में प्रमोशंस की बात कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड यू कैन से। सो हमको अब जो हमारे पास सिनेरियो बनता है प्रमोशंस का, वो ऊपर से नीचे देखने का है कि हम एजीएम टू डीजीएम और एसडी टू एजीएम के प्रमोशंस की अगर हम पर फोकस करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली इस ग्रेड में जेटीओ टू एसडी में वैकेंसीज सफिशिएंट आएंगी। और हमारा फाइनली रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान जो चल रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हम मैनेजमेंट से ग्रैब कर सकते हैं ऑन द वर्ज ऑफ बीबीएनएल मर्जर, 4G सैचुरेशन और एमटीएनएल प्रपोज्ड मर्जर, ऑल दिस थिंग्स जो भी हमारे नॉर्म्स होंगे उनके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। तो सफिशिएंट पैकेज हमें वैकेंसीज का मिल जाएगा जिससे कि किसी को कोई परेशानी आगे ना हो। डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव कोटे में रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कम वैकेंसीज में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को फेस करना पड़ेगा, ये तो रहने ही वाला है। और कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि जहां आपको एक दूसरे से कम्पीट करना पड़े। तो सीनियरिटी बेसिस पे आपके प्रमोशंस एज इट इज चलते रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में जो भी आपको एलडीसी के थ्रू मौका मिलेगा उसमें आपको डेफिनेटली चांस मिलेंगे कि आप अपने करियर को एनहांस कर पाए। तो इस सब चीजों के लिए जो हमारे एक्शन प्लान्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो हमारे जो प्लान अभी तक तो मैंने ये पाया है कि जो हमने सोचा था वो सब कुछ हो रहा है, जो हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने सोचा था। अब धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो स्लोली हम उस डायरेक्शन में है। उम्मीद है कि इस चीज को बाकी सब लोग भी समझेंगे और इसका सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू सुनील, थैंक यू। इसी बीच में एक बहुत अच्छा कमेंट आया था जो मैं शेयर भी किया था, बीच में आपने पढ़ा होगा। हाँ, ये कमेंट आप लोग के लिए सर, यू पीपल आर डिजर्व दिस, द वे यू पीपल आर डूइंग वर्क, दिस इज कॉल्ड pseudo मैनेजमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशूज। वी शुड हैव द इन्फो अबाउट इशूज एंड इट्स वे फॉरवर्ड। ये मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में किसी योगेश छावड़ा जी ने लिखा है और मुझे लगा सही लिखा है आप लोग के लिए। आप यू पीपल हैड डन अ वेरी गुड जॉब and the in-depth knowledge you are having about the issues that really percolate that we are going to the solve our issues very बहुत जल्दी हम सॉल्व करने वाले हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैडम कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैडम की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि मैडम को जल्दी घर जाना होगा और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर वेट किया है और ऑफिस से very much impressed with both of you. तो नहीं, क्वेश्चंस तो है मैडम अभी, लेकिन सुनील एंड नित्या इज फेसिंग सम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। नित्या इज नॉट एबल टू टॉक। एनी हाउ वी विल टेक सम 2 or 3 questions which we will try to sum up in a very short. Okay Sunil, because there is some time constraint. We also know that you also people also travel to your home, and traveling in a Delhi is a time consuming. So we will try to wind up in a 5 or 10 minutes time. Very short questions. Case related we were discussing. Can you elaborate something about 22820 case which have been recently filed by AIGETO, which we have been hearing? We came to net that case at I think Chandigarh or somewhere there, lost. Then we approached High Court. So can you elaborate something related to that? Where is that case filed and when is the hearing? Something like that in a short. Well, sir, actually giving a more detail in this is not advisable, but I can say you that we have, as we all know, that we have lost this case in PCAT Delhi, and judgment came against us. Immediately after that, situation was reviewed, reviewed by our General Secretary, and completed. We have gone against this judgment on 30. We have gone against the judgment. So now case is pending in Delhi High Court. So definitely we are hopefully we will get a favorable judgment against this, because most of the time I was also available in those court hearing, and this case was not heard on a merit basis. So this can I say in this court case, and already we have implemented
against this in a High Court, Delhi. Okay, that's enough. We understand that court matters are really sensitive, and that cannot be discussed in a lot or something like that. Anyhow, we came to that case has been filed at Delhi High Court. That is sufficient for us, and you people are following it up. Certainly, there is something good to hear in the near future. Uh, it was good to talk to you all. Lots of question was there, which I am missing just now because there is shortage of time. One more thing, recently I came to know about that pension issue of some of the LIC JTOs who were recruited before that, I think before 2000. And that case was highlighted by that AIGTO GS writing a letter. Can you elaborate something in a short? In a short, we will not take much time. Actually, first batch of JTO, at that time they called TTA, first batch. Their actually notification were issued in a DOT time, and their recruitment were held in BSNL. So on the basis of notification, they filed a court case in Chandigarh CAT. So that court case is going on, and definitely AIG also in support of that. If anything we can, give to them from our side or support or anything, whatever they want, definitely we should extend this. And we are also pursuing this, and we are also monitoring the development in here. We are actually discussing with the management also on this, and we are pursuing the development in court also. So this is basically a case which a notification issued in the DOT era, and then BSNL converted in 2000. After that, that recruitment was held. So this has merit. Oh, that's enough, and I think that's a positive thing which I have heard and read as in a letter form from the GSAIGETO. That's a good thing, and we should pursue. And if people are pursuing, certainly your people are pursuing. पारुल मैडम, हम अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं. मुझे पता है आपको भी और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि what I feel that Sunil has also to go home is उसके बच्चे वेट कर रहे होंगे, and you are also your family is also waiting at home. हाँ, so कोई एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन जल्दी इसको बाइंड अप करेंगे. From my side, every question is answered very well from Nitya and Sunil ji. Sir, before concluding, I want to appeal to our member. Yeah, certainly. I will also request that an appeal should go from your end. What do you feel, and what is your suggestion for all the executives? What should do they do? So certainly an appeal is required from your side, and from I will try to get it from Nitya also if his communication is established. Sunil. Actually, sir, this is from my side. What we observe कि हमने BSNL वन एसोसिएशन की बात BSNL में हम फॉर्मली इस बार लेके आए. हमारे जनरल सेक्रेटरी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो ज्वाइंट फोरम एग्जीक्यूटिव का ज्वाइंट फोरम है उसमें रखा. लेकिन कुछ एसोसिएशन, कुछ हमारे जो उसके पार्ट थे ज्वाइंट फोरम के, उनको कुछ हिच थी इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो हम उसको BSNL वन एसोसिएशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए. उसी का नतीजा है कि आज हमने AIGETOA हैज स्प्रेड इट्स विंग एंड इंक्लूसिव थॉट के हमने सभी को आप इसमें लेने के लिए तैयार किया. अभी आपने रिसेंटली खान सर ने ज्वाइन किया, और भी ऐसे लोग हैं जो AIGETOA में ज्वाइन हुए. ये इसका ही पार्ट है कि हम वन एसोसिएशन, वन BSNL वन एसोसिएशन कॉन्सेप्ट में करते हैं, और ऐसी हर उस शक्ति को जो सिर्फ पावर हंग्री है और ये चाहते हैं कि नहीं एसोसिएशन एम्प्लॉय के जो एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय के जो पॉइंट्स है वो साइड हो जाए, और अपना एक प्लेटफॉर्म पे होते हुए उसकी जो एक क्या कहते हैं पावर को एंजॉय कर पाए या उसकी जो लग्जरी को एंजॉय कर पाए, हम उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं. उसी के तहत आज AIGETOA ने अपनी जो एक बेसिक एक फॉर्मेट शुरू हुआ था जिसमें जब वो सिर्फ ग्रेजुएट इंजीनियर्स की एसोसिएशन थी,
एम्प्लॉय के हित में आके, एम्प्लॉय के प्रॉफिट को देखते हुए उसने आज इस चीज को और बड़ा किया है और सभी को एक्सेप्ट किया है और सभी को इंक्लूड किया है, जिससे कि वन बीएसएनएल वन एसोसिएशन का हम कॉन्सेप्ट बीएसएनएल में ला सकें और एम्प्लॉय को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकें। मेरी अपील उन सभी दोस्तों से है, साथियों से है, सीनियर से है, सर अपने रिक्वेस्टेड एंड फोल्डेड हैंड्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो किसी भी ट्रैप में ना आए और आप अपने थॉट प्रोसेस को और थोड़ा वाइडर करें और इंक्लूसिव करें और एआईजेटीओ को फुल सपोर्ट दें, जिससे कि मैनेजमेंट के सामने हमारे जो पेंडिंग इशू इस साल रह गए हैं या आगे आने रह गए या आगे आने वाले टाइम में हम ले सकते हैं, उनको और बल मिल सके। So my request to join all, irrespective of sections of executives, all are welcome in AIGETOA and support wholeheartedly for a better future of executive, for better career progression, for better career progression, for better life to yourself. You can say कि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आपने अपने बच्चों को गुड एजुकेशन देनी है, आपने अपने परिवार को माता पिता को गुड मेडिकल फैसिलिटी देनी है या अपने परिवार की नीड्स के लिए पूरा एक अपनी पूरी करनी है, तो आप AIGETOA को ज्वाइन कीजिए और उसके जो अधूरे काम रह गए हैं उनको आप पूरा करने के लिए उसका एक हिस्सा बनिए, पार्ट बनिए। That's all from my side, sir. Thank you, Sunil. Thank you. In your opinion, you covered a very nice point, and that was being missed from us. और वो मेरा नहीं, मतलब पारुल मैडम, यू मिस्ड योर क्वेश्चन। एक्चुअली पारुल मैडम का भी एक कंसेप्ट रहा और हम लोग बात भी करते हैं, व्हाई नॉट ओनली वन एसोसिएशन, and we think about that one in a one PSU, one association should be only there, and Parul madam is also supporter of that only, and this was her favorite question, why she missed it, and I thank Sunil that you answered that in your own way. Thank you. So we are also favor of one PSU, one association, and I think AIGTO is working towards that only, and people are coming, joining us, favoring us for that. That's what I see from the momentum what we are receiving in today's day. Isn't it? Anyhow, some comments in chat box from Nitya side. Yes. There are some what? comments in chat box from Nitya side. We are being asked to show them on the screen. Yes, certainly. A comment from Nitya. Yes, madam. Regarding this, am I audible, Sunilji? Yes. Yes, there's something in chat box. Yeah. See, the hearing in Chandigarh CAT, the delay was mainly due to there was the double bench should hear this case, and there was a delay in appointment of administrative judge. Usually from Bangalore CAT, there was additional administrative judge was looking here in Chandigarh also. So whenever they find time to hear cases, they join through VC here. Video conference in Chandigarh, and regular judge was regular administrative judge was appointed only in December. I think December only, December or November they have appointed regular administrative judge in Chandigarh, and then the cases were listed, and again it was coming back. And in December, our first hearing came after this long gap after Corona, and appointment of administrative judge and the reconstitution of double bench in Chandigarh now came. Now this administrative judge is also looking after the circuit bench of Simla also. So till afternoon they are hearing happens in Chandigarh, and after afternoon Shimla circuit also is happening, and the administrative judge is common for both the court number 1 and court number 2 double bench. So there is a very literal delay which is happening in our court case hearing.
Last time also the hearing came for number 30, but the cases heard were till 22. And I hope this time 17th hearing is scheduled. I hope there will be enough time by God's grace. If you are having enough blessings, definitely our case will be heard, which we are waiting for so much of years. If this case is heard, we will have a good opening for all the E2, E3 sufferers. Definitely, we will have some good breakthrough. Nowadays, management is giving a huge blockade for financial issues. So when there is a pressure from government side or from a judicial side, definitely this case will be reopened and we will have a good output in this case. As per the learned counsels of our in this case from our side, the case is very much positive for us, and the details they are giving us is very positive. So they just need hour, 1 hour or half an hour hearing so that we can have a good interaction and we can have a good direction out of this case. Thank you, Nitya. Thank you, Nitya. You were very attentive in reading the comments box, and you took the question of our general member. Thank you, and you answered that also. Thank you, Nitya. Parul Madam, should we conclude this? And Yeah, at last, Sunil Gautam appeal has been made, and I would request Nitya also to, if he wants, to raise the appeal. Nitya? I think again there is that yeah. Yes, not audible communication. to me. Yeah. I think he is not able to hear me. Anyhow, Sunil and Nitya, it was very nice talking to you. And Parul Madam, you have spared your precious time. Certainly, thanks to you also, and thanks to Nitya Jaral also. Thanks to Sunil Gautam, I really enjoy giving being your part of precious this time. type of conversation. Yes, right. I also enjoyed, and it was a very healthy and friendly conversation and discussion where we Yeah. were able to get very high insights about the pay scale committee, pay scale matter, and JTO's scale issue, pension issues, and that JE period pay loss issue. And it was also elaborated about the differences being made by the some of the parties. And I think the people are well aware and intelligent enough to understand all these things that they will not get on their way. And they will certainly understand what these people, Sunil and Nitya and many all the committee members, I salute all them. They had given their precious time apart from office, apart from home, to prepare that report. That will certainly help our CHQ team to uh, get the issue settled. Certainly, hats off to you all guys, and certainly thanks to Nitya Darald and Sunil Gautamji. And as a token of love, we always give a gift to the guest who come to our talk show. Certainly, we have got that gift, and certainly it's not possible to send it through this video conferencing. That will be sent it through post or whenever we come to Delhi or Nilgiri. Nilgiri is a beautiful place, but I have heard on the internet. Certainly, I wish that I visit Nilgiri and meet Nitya and hand over that gift. Certainly, that is not possible, but certainly that is possible that I will send it through post. Thank you, Sunil. Thank you, Nitya. Thank you, Parul Madam. I'm interrupting you. And Nitya ji Yes, wants madam. to appeal. Yes, Nitya. Yeah, can I? Yes, sure, Yeah. sure. Sure. Dear all executives of BSNL, see, we are in midway of a very good breakthrough in all our financial issues. The main thing is the joining and affiliation from BMS. Definitely, this will give you a good breakthrough with the top leaders, political leaders,
and MOC, so that if you are having a positive meetings and if you are good enough to convey our issues to them, definitely our younger lots, our issues will be taken care by Government of India with the help of BMS. This affiliation is one of the major turning point in AGTO's history. Definitely, our leaders who are working sincerely and transparently for the welfare of the executives of BSNL, added with the power of the BMS, I definitely hope the future and the welfare of the executives in BSNL will be brighter with the AIGTOA. So I request all our executives in BSNL to support AIGTOA and join AIGTOA. Thank you. Thank you, Nitya, for such a strong appeal. So it's all. Thank you. But at last, one more request, Sunil, Gautamji, and Nitya Jara, whenever you get time, you visit Bhopal. I will be very happy to welcome you all at Bhopal. Whenever you have time, please spare your time. And We'll thanks be for handed joining over us. to Nitya. Thank you both of you, sir, for inviting for this valuable talk. One more thing, if it's possible, we can explore Thank you, that. Vinit sir. I am very. Thank you, madam. Thank you, Thank you. Sunilji, for this Thank wonderful you. evening. Thank you. And Yeah. at last, one more request, if it's possible, if I am really affected by all people like you, and would like to meet in a talk show with all the pay scale committee members. If it's possible, you can have a talk show with all the pay loss committee members. Then certainly it will be more knowledgeable for us and all the members too. Certainly we can plan that on the future. Anyhow, Very nice at last, invitation, once Nitya. again, yes, madam. Very nice invitation. Nice thought. Yeah. Uh, I think Sunil and Nitya will work on that, and we will get one more time to interact with them. Uh, okay. Thank you, Sunil. Thank you, Nitya. Thank you, Parul, madam. Thanks a lot, sir. Thank you. Good night. Thank you, Good Vinit. night. Thank you, Sunil, and thank you, Nitya ji. Thank you, Jiren.